Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to visit the IKEA store. Okay, let me be honest. So the main purpose of visit is to check it out what are the things inside this big huge store. Okay, are you ready? Here we go. So we reached the entrance. Okay, so because of this corona situation, we have to go to the parking area where they have arranged a sitting area. Huh. Look there, we have to go there. It's showing no entrance. Just follow the link you said. So this is the sitting area which they have arranged. Okay, so what they do is once the area is full, they send us inside in a batch. It's like ask us to form a line and we start heading inside the store. That's what they are doing. Okay, so here we go. Okay, so let's check it out. What are there in each floor? So according to that, we can plan. Actually, what we did is हम लोग directly सबसे ऊपर वाले floor पे आ गए. तो यहाँ basically क्या है like home decors हो गए and like bedroom sets. They have arranged. Oh my god, you have to just see this video. 2 BHK model room set किया है, 1 BHK model room set किया है and very very affordable prices. Like they are starting this the bedroom model of from 49,000 and all. So I think you should check it out. Okay guys, so those who don't know, this is for them. We have only one IKEA store in Mumbai which is situated in Navi, Mumbai. Just Google it, you'll get the whole address and you must visit the store. I think it's mind-blowing. I mean, look at these arrangements, guys. Like they have kept small things inside also, so that those people who don't know, so उनको idea मिल जाएगा कि ये products के अंदर क्या क्या रखा जाता है. So that's really very interesting. And plus, you know what? It's very compact. Whole things you are getting inside, like the laundry area and everything. And बहुत ही compact, मतलब आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा. यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा है कि like those who have 2 kids, उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बंक बेड एंड यहाँ पे जो छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस आप लोगों को दिख रहा है लाइक लेफ्ट साइड ऑफ दिस वीडियो, वो लाइक साइड टेबल भी है विद दिस थिंग. तो छोटे छोटे चीज़ें मतलब अपने बच्चों को रखना है तो दे कैन कीप इट. सो वो मुझे आइडिया इंटरेस्टिंग लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट.
So isn't it amazing, guys? So let me know in the comment section like कैसे लगा वीडियो, and पूरा वीडियो एंड तक देखना, ओके? सो ये भी एक रूम सेट किया है, विच इज़ हॉल रूम सेट किया है, आई मीन लिविंग एरिया. सो आई रियली लाइक दिस वन ऑल्सो. So you know what, you can buy these products through website also. They have a website like IKEA website, so from there also you can check it out and you can buy. But if you visit here, like you'll get a whole lot of ideas. So this is the same floor, like after this bedroom model area. तो यहाँ पे अलग से एक मतलब थोड़ा आगे अलग से एरिया भी है, मतलब एक एक प्रोडक्ट भी बाय कर सकते हैं, होम डेकोर्स एंड सोफा सेट्स एंड एवरीथिंग. सबसे ज़्यादा जो बेडरूम मॉडल है जो सेट किया हुआ देखा, सो सबसे ज़्यादा मुझे ये वाला अच्छा लगा, द वाइट थीम. तो लाइक एवरी वन हैज़ देयर ओन फेवरेट्स, मुझे ये मतलब पसंद है. एंड सबसे ज़्यादा व्हाट, दिस चेयर्स, ओ माय गॉड, मुझे कब से मतलब चाहिए था. एंड ऑनेस्टली लाइक लेट मी बी ऑनेस्ट, लाइक मैंने ये हॉलीवुड सीरीज़ में देखा है एंड तब से मुझे ये चेयर्स चाहिए, बट मैंने नहीं लिया, वो अलग बात है. इंडिविजुअल चेयर्स के हिसाब से मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा, बट ठीक है, जब लेना रहेगा तो ले लेंगे. वन थिंग इज कॉस्ट के साथ क्वालिटी तो है. सो कहीं कहीं लाइक लिविंग रूम के भी मॉडल सेट किया है. सो यू नो व्हाट, वन विल गेट द आइडिया लाइक व्हाट विल गो विद व्हाट. ओके, सो यहाँ पे इंडिविजुअल सोफाज यू कैन बाय, लाइक नॉट ओनली सोफाज, लाइक टेबल्स हो गया, कबर्ड्स हो गए, वार्डरोब्स हो गए, लाइक एनीथिंग, कॉफ़ी टेबल्स, एनीथिंग जो होम डेकोर से रिलेटेड हो. So you know what, like I found this photo frames pretty reasonable, like 99 rupees में, 79 rupees में एक photo frame, it's really reasonable. And then this containers, candles, honestly मैंने candle लिया but मुझे इतना नहीं अच्छा लगा, पता नहीं, like it is not like मैंने जो expect किया उतना fragrance नहीं spread हुआ पूरे रूम में. मे बी अगर रूम बड़ा रहेगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं अच्छा लगा, इतना इफेक्टिव नहीं लगा. बट आई फाउंड दिस कैंडल स्टैंड्स प्रिटी क्यूट दो. सो दिस इज़ द कैंडल विच आई बॉट. ये इतना इफेक्टिव नहीं है, सो दिस इज़ माई ऑनेस्ट रिव्यू ऑन दिस. Just look at him.
He's playing. It's cute, right? So another eye-catchy thing is what like I found this dining table. ये जो टेबल है you know what इसको फोल्ड भी कर सकते हैं एंड बड़ा भी कर सकते हैं which is like अगर गेस्ट लोग ज़्यादा आया तो that's very interesting. मतलब आजकल के घर में बहुत स्पेस कम होता है तो according to that this is a smart idea I'll say. Okay, so I like this tiffin box. It's pretty cool, right? ये तो मैंने एक खरीद ही लिया है. And heading to यहाँ पे मतलब this is like kids section. मतलब बच्चों के like newborn baby से लेके everything one parent मतलब एक parent को जो चाहिए वो यहाँ मिल जाएगा everything. नॉट ओनली न्यू बॉर्न बेबीज एक किड के लिए क्या क्या ज़रूरत हो सब मिल जाएगा यहाँ पे. कप्स हो गया, प्लेट्स हो गया, लाइक चेंजिंग टेबल, एवरीथिंग यू विल गेट इट ओवर हियर. This is the changing table. Okay, यहाँ मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है ये है wall lights. This is really very cute. उसके बाद आए हैं वही अगेन बच्चों के सेक्शन है ये लाइक सीनियर जूनियर केजी बच्चे उनके लिए जो मटेरियल्स लेना हो वो बच्चे के लिए है आई थिंक सो. Okay, now really we are heading to the restaurant area. इतना भूख लग रहा है we can't tell you. यहाँ हम लोग को अंदर आके 3 hours हो गया है. We are so exhausted that we have to eat something. This area is also pretty huge. So starting with coffee हम लोग ने कॉफ़ी नहीं लिया. डिनर का टाइम हो गया था तो हम लोग ने डायरेक्टली खाना ही ले लिया. हम लोग ने सिंपल वही चिकन बॉल्स इन ग्रेवी एंड वेज बॉल्स इन ग्रेवी ले लिया. दैट्स इट. अभी कर रहे हैं टेबल को सेट जो है आंटी कर रहे हैं. These are salads.
एंड या यस वी ऑर्डर्ड पोटैटो वेजेस आल्सो विद दिस एंड फॉर डिज़र्ट के लिए गुलाब जामुन. एक्चुअली आई वाज लुकिंग आउट फॉर चीज़ केक बट ख़त्म हो गया था सो लाइक वी ऑर्डर्ड गुलाब जामुन्स. ओके सो खाना आ गया है एंड वी आर गोना ईट. जस्ट लुक एट हिम. And we are leaving now. सो दिस इज़ दी लोअर फ्लोर. यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा एक्सप्लोर करने टाइम नहीं मिला एंड ऑल्सो द बिलिंग काउंटर. यहाँ पे मोस्टली सब कुछ सेल्फ सर्विस है तो प्रोडक्ट्स जो परचेज़ करते हैं खुद से बिलिंग करके लेके जा सकते हैं. एंड ऑल्सो देर इज़ अ कैफेटेरिया इन डाउन स्टेयर्स विच इज़ द लोअर एकदम जो लोअर फ्लोर है. आई थिंक L1. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. यहाँ पे मैंने देखा कि यू कैन बाय फूड प्रोडक्ट्स ऑल्सो लाइक कॉफ़ी चॉकलेट्स. देर आर मैनी थिंग्स लाइक मीट बॉल्स चिकन बॉल्स like there are many things you can buy which is again pretty cool. सो वी हैड डिनर एंड वी वर फीलिंग सो फुल तो ये सब ट्राई करने का मौका मिला ही नहीं. एंड यू नो व्हाट गाइस, यहाँ पे आते हैं ना तो 4 आवर्स पकड़ के ही चलना चाहिए. हम लोग को 3 आवर्स ही मिला एंड इतना क्राउडेड था कि हम लोग को मतलब जाना पड़ा, जल्दी जल्दी निकलना ही पड़ा. सो नाउ वी आर लिविंग बैक टू आवर होम. इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस दो.